A very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, today is 24th January and we are here with the Hindu analysis of 24th January. आज 24 जनवरी है और आज हम लोग द हिंदू एनालिसिस 24 जनवरी के लेकर हाजिर हैं. So I hope you are aware. We come up with this session at 11 a.m. in the morning. So let's start without wasting the time. Today is Tuesday and आज Tuesday है 24 जनवरी. And we will be discussing the first page important articles of first page. So here is an article which says Maricom led panel to probe wrestlers charges. So this is a very important article. ये काफी important article है. So we will be discussing about it. The next one is this one. Two students in Kerala infected with norovirus. तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि केरला में दो लड़कों को, दो बच्चों को नोरो वायरस इन्फेक्ट किया है. तो क्या है हम लोग जानेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. ओके, देन नेक्स्ट वन इज दिस वन. 21 अंडमान आइलैंड्स नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग इस पे जानते हैं, इस न्यूज से. मैरीकॉम लेड पैनल प्रोब रेसलर्स चार्जेस. Now, first of all, we will be discussing the background of it. Then you will understand in a more effective way. पहले हम लोग इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा. I hope you are aware that I think few days back, actually few weeks or you can say or few days back, this thing was very much in the news. That actually wrestlers were protesting against Mr. Brij Bhushan Sharan. And he is the WFI, that is World Wrestling Federation, actually Wrestling Federation of India's president. Now, what was the protest? So the main actually, there were a lot of wrestlers. One of them was Vinesh Phogat, and other wrestlers were protesting at Jantar Mantar in Delhi. Because they alleged that having that Mr. Brij Bhushan Sharan is accused of sexual harassment. So according to the wrestlers, Mr. Brij Bhushan Sharan is actually a sexual harasser, etc. and all. इसीलिए वो न्यूज में था. WFI प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर के पास. ओके, एंड yes, you can see. So these are the wrestlers. Bajrang Punya is here. Then here is Vinesh Phogat, and then other wrestlers were there. So wrestlers threatened to step up protest against WFI chief. These things were coming actually in the news. इस तरह की न्यूज उस वक्त आ रही थी. So I hope you are aware of this. आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा, ये इस न्यूज को देखा होगा. So this is WFI is actually Wrestling Federation of India. Okay. So the chairman of or the president of Wrestling Federation of India is Mr. Brij Bhushan Sharan Singh, and the allegation of sexual harassment is against him. इन्हीं के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन है इन लोगों के द्वारा. मतलब जो प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी जो रेसलर्स हैं, जो इंडिया के बड़े बड़े रेसलर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट का उन्होंने इल्जाम लगाया. सो दे वांटेड कि देयर शुड बी अ फेयर प्रोब शुड बी डन. तो एक फेयर प्रोब होनी चाहिए इनके अगेंस्ट टू फाइंड आउट अबाउट द एलिगेशंस वेदर इट्स ट्रू और नॉट एंड ऑल. ओके, so for that then actually the Mr. Anurag Thakur, the sports minister, came and convinced them कि okay, we will be having actually we will be conducting the actually the investigation and all. तो हम लोग उसकी जांच करेंगे. So then the government has set up a committee, Maricom led panel to probe wrestlers charges. तो wrestlers ने जो इल्जाम लगाए, पे charges का मतलब होता है इल्जाम लगाना, or can say allegations. So the wrestlers who have put allegation on Mr. Brij Bhushan Sharan Singh, so that will be probed by Maricom led panel. So there will be a panel, or you can say panel means a committee where there will be some members, and the chairperson would be actually, or the head would be, chairperson of that committee would be Maricom. Okay, ठीक है, क्लियर है. तो एक पैनल, एक कमिटी बनाएगी, उसमें कुछ लोग हैं, उसकी जो चेयरपर्सन होंगी वो मैरीकॉम होंगी. ठीक है. So the question is, I hope you are aware of Maricom, so that is why a question is there. Maricom is famous for which sports? Wrestling, boxing, table tennis, lawn tennis. वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है, आपको आंसर बताना है. And these are your options. What is the right answer? क्या सही जवाब है, कोई बता सकता है? Anyone? Because I think there is a film based on her life as well. हाँ,
So everyone please press the like button. सबको like button press करते जाना. Yes. The right answer to this question is boxing. So B is the right answer. Priya Chavan is right. Very good. B is the right answer to this question. ठीक है. So Mary Kom, actually he is a former MP as well, a boxer and all. So she actually she is famously called as Magnificent Mary, and she is the only female Indian boxer to have qualified for 2012 Summer Olympics. बहुत सारे उनके नाम बहुत सारे. She is the only woman to win World Amateur Boxing Championship 6 times. तो उनके नाम बहुत सारा actually record है. ठीक है. So she is having a lot of records, and I think there is a film based on her also. शायद film भी बनी है and all. So just have an idea about it. Now, so what does the article say? तो ये article क्या कहती है इसको हम लोग जान लेते हैं. So the Union Minister Mr. Anurag Thakur on Monday announced the 6-time world champion and Olympic medalist boxer MC Mary Kom. तो 6 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुकी है मैरी कॉम को हेड बनाया जाएगा 5-member oversight committee. Yes, so panel will be having 5 members and one of them will be the head और chairperson एक उसमें से head होंगे और उनका नाम है मैरी कॉम. ठीक है. So there are other 4 members as well. So 1 chairperson plus other 4 members है ना. So बाकी 4 members कौन कौन है? योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरगुंदे, then other people like Commander Rajesh Rajagopalan and other people are also there. तो सारा नाम नहीं याद रखना, बस chairperson का नाम याद रखना है. ठीक है. So it is an oversight committee which will investigate the serious charges leveled by the wrestlers and will submit the report within a month. ठीक है. तो 1 महीना के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे गवर्नमेंट को, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को. ओके, so that is how it works. Now you can see then the further article says several top Haryana based world and Olympic medalist wrestler including Vinesh Phogat, Bajrang Punia and Sakshi Malik began a protest. तो उस प्रोटेस्ट में कौन कौन लोग थे? विनेश फोगट थी, बजरंग पूनिया थे और साक्षी मलिक. दीज आर वेरी फेमस रेसलर्स फ्रॉम इंडिया एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली अगेंस्ट मिस्टर ब्रिजभूषण शरण. एंड ही सेड कि देयर इज अ लार्जर कंस्पिरेसी टू मालाइन एंड डिफेम हिम. सो उन्होंने कहा जो ब्रिजभूषण शरण साहब ने कि ये मेरे खिलाफ मतलब कंस्पिरेसी साजिश है बदनाम करने के लिए. सो ही इज एक्चुअली अ पॉलिटिशियन एज वेल. ही इज अ बीजेपी एमपी फ्रॉम कैसरगंज इन उत्तर प्रदेश. Okay, so Mr. Brijbhushan Sharan, the WFI president against whom the allegation has been made, he is a politician and he is a BJP MP from Kasarganj in Uttar Pradesh. तो उनके खिलाफ जो उनके खिलाफ एलिगेशन लगा है वो एक पॉलिटिशियन भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी, we'll get to know what will happen after 1 month. So this oversight committee will tell है ना कि क्या हुआ exactly. So let's move on further. ओके, ये डेट से कुछ पता होना चाहिए. देखो 18 जनवरी को दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड ऑन द सेम डे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सेंड नोटिस टू डब्ल्यूएफआई सीकिंग एक्सप्लेनेशन. देन ऑन 19th जनवरी मिस्टर अनुराग ठाकुर मीट्स द रेसलर. So Mr. Sports Minister goes there, meets them, and 28th January they call off the protest. And on the same day WFI rejected all the allegation. तो WFI ने कहा सारा allegation को कहा कि नहीं गलत है. Then next day Sports Ministry asked WFI executive to abstain from activities of the federation and all. फिर next day कहा कि WFI के जितने भी executive हैं उनको कहा कि अभी आप इस जो WFI का काम है उससे अभी restrain कीजिए, रुक जाइए, abstain कीजिए, यानी stop doing work right now. ठीक है. So क्योंकि इतना बड़ा allegation लगा है ना, तो उसको पहले एक्चुअली allegation को ensure किया जाए कि उसके सारे probe हो जाए. All the probe should be done to find out the truth, है ना. So let's see what will happen. Okay, the next one is page number 1 में another article was there. 2 students in Kerala infected with norovirus. Okay, you can see it here. यहाँ पे भी आए. तो norovirus एक disease है. उसमें 2 बच्चे actually affected हैं. So they are actually from this Kakkanad is a place in Kerala. They are class 1 and class 2 student. यानी वो छोटे बच्चे हैं. उन दोनों को norovirus infection affected है. So what is that? If you read it, it's a winter vomiting disease. यानी ठंड में ज्यादातर होता है. Okay, it's a sort of a vomiting disease which affects gastroenteritis. Means देखो stomach वगैरह पेट उठ पर असर पड़ता है. ठीक है. Vomiting तब होती है ना जब खाना पचा नहीं या something like that, है ना. So when actually the vomiting, it causes vomiting, diarrhea, है ना, water loss from body, stomach pain. So this is actually the norovirus, and the problem is that this is contagious. Contagious, you understand? There's another word for this, communicable disease. यानी फैलता है. जैसे कोरोना वायरस इज कंटेजियस, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना. तो वैसे ही आप देख सकते हो, इट इज अ कंटेजियस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टोमक फ्लू और स्टोमक बग. तो ये पेट से ही रिलेटेड बीमारी है.
कुछ भी होता है, जैसे पेट अगर गड़बड़ाता है तो वॉमिटिंग भी तो हो जाता है ना, so that is why yes, so it is actually related with that. So go and read about it, थोड़ा सा पढ़े नोरोवायरस के बारे में. Then this is an important article in Star Market. Guys, everyone please press the like button. सबको like button press करते जाओ. Everyone share this video and subscribe to our channel as well. 21 Andaman Island named after Paramveer Chakra awardees. Now, what is Paramveer Chakra? पहले तो हम लोग ये जानते हैं. So this is highest wartime gallantry award. ठीक है, इन जंग के दौरान सबसे अगर किसी ने बहुत अच्छा बरेवरी दिखाया तो उनको जो अवार्ड मिलता है, सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड मिलता है, उसको लोग परमवीर चक्र कहते हैं. ठीक है, लाइक इन सिविलियन अवार्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, है ना, तो हाईएस्ट है सिविलियन के लिए. सो फॉर मिलिट्री, इफ दे आर इन वॉर टाइम सिचुएशन एंड they have done a very good job, commendable job, so they are given these medals and the top one is PVC, परमवीर चक्र. ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो ओहदा मिलता है या सबसे ऊंचा जो अवार्ड मिलता है उसको हम लोग परमवीर चक्र कहते हैं. सो जो इंडिया में हिस्ट्री में जो जो लोगों ने परमवीर चक्र जीता है उनके नाम पर आइलैंड का नाम रखा गया. ठीक है, so just have an idea about it. So 21 Andaman Islands named after Paramveer Chakra awardees. So there's a question for you. I know it's a very easy question, but still I'm expecting you all to answer it. Andaman Nicobar Island is located in Indian Ocean, Arabian Sea, Red Sea, Bay of Bengal. कहाँ located है? अंडमान निकोबार आइलैंड कौन सी जगह लोकेटेड है? इंडियन ओशन में, अरबियन सी में, रेड सी में या बे ऑफ बंगाल में? क्या सही जवाब है? Can anyone tell me what is the right answer? This is the easiest question of the day. So I'm expecting you all to answer it because it's very simple. ठीक है, so let me show you. Here is India. This is Bay of Bengal, है ना, and this is Arabian Sea. Yes, Priya Chavan, right? D is the right answer. And here you will find Andaman and Nicobar group of islands, है ना. ठीक है, तो ये वाला है ना, बे ऑफ बंगाल में. यस, रश्मिकांत ओझा, यू आर राइट. सो दिस इज अंडमान ग्रुप, दिस इज निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. तो इस टोटल को अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहते हैं. और ऊपर वाला जो सेक्शन है, द टॉप सेक्शन इज एक्चुअली अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड. ठीक है, एंड एक्चुअली इट हैज अ लॉट ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है. ठीक है, सो आउट ऑफ दोस, आई मीन 21 आइलैंड्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर एक्चुअली द परमवीर चक्र विनर्स. ठीक है, तो अवार्ड जो आइलैंड है सबका नाम रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इट हियर, जैसे अब्दुल हमीद द्वीप. द्वीप मतलब होता है आइलैंड इन हिंदी. सो अब्दुल हमीद वाज अ वेरी फेमस एक्चुअली पर्सन हु फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड ऑल, एंड आई थिंक एंड दैट इज व्हाई ही वन परमवीर चक्र एंड ऑल. सिमिलरली शैतान सिंह द्वीप, सिमिलरली योगेंद्र द्वीप, संजय द्वीप. सो देयर आर 21 द्वीप्स लाइक दिस. द्वीप मींस, दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ हिंदी, लेट मी टेल यू, द्वीप मींस आइलैंड. ठीक है, तो उनके नाम पर आइलैंड का नाम रखा गया है. ठीक है, सो that is why you should be knowing it. And Home Minister was present in Port Blair, the capital city of Andaman Nicobar Island. Is it clear? आप देख सकते हो, ये लोग inaugurate कर रहे हैं, है ना. So just have an idea about it. Now the next one is yesterday actually PM Modi, and that is on 23rd January, renamed 21 islands, है ना. And yesterday 23rd January was Parakram Divas. And why 23rd January is considered as Parakram Divas? Because it is a birthday of very famous person. What is his name? You have to tell me. Your options are Swami Vivekanand, Subhash Chandra Bose, Sardar Patel, Shyama Prasad Mukherjee. Okay, what is the right answer? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. Everyone please press the like button, share this video and subscribe to our channel as well. आपको ये बताना है कि 23 जनवरी को पीएम मोदी ने 21 आइलैंड का नाम बदलकर परमवीर चक्र की विनर अवार्डी के नाम पर रखा है. तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसीलिए खास दिन है. तो पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, वो किसका बर्थडे है? यस यस, प्रिया चवन, सुफियान, रश्मिकांत, प्रिया चवन, यू आर राइट. सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो बी इज द राइट आंसर. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, very famous person in the history of India, and actually he was one of the very famous freedom fighter, and that is why he was born on 23rd January, and that is why 23rd January is called as Netaji Jayanti. ठीक है, so Netaji actually is Subhash Chandra Bose nickname is Netaji. ठीक है, and he was instrumental in actually leading Indian National Army, और उसको what we call it as आजाद हिंद फौज. आजाद हिंद फौज को लीड करने में उनका काफी बड़ा रोल था. ठीक है, so just have an idea about it, है ना. So go and read something about it. Go and read something about provisional government he established in Singapore and all. ये सभी पढ़ो थोड़ा सा. Indian National Army, आजाद हिंद फौज से related, because that is important. Okay,
Yes. Now let's move on to page number 4. एक छोटी सी आर्टिकल थी बट इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स रिलेटेड. हिजाब राव सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर लिस्टिंग स्टूडेंट्स प्ली बिफोर अ 3 जज बेंच. तो हिजाब से रिलेटेड जो इशू है इसको अब सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच में भेजेगी. नाउ व्हाट वाज देयर? देखो एक्चुअली देयर वाज इशू रिलेटेड विद हिजाब बैन एंड ऑल इन कर्नाटक. So Karnataka High Court actually upheld the hijab ban, then it went to the Supreme Court and Supreme Court delivered the split verdict. चूंकि लास्ट ईयर स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया था, so it was a 2 judge bench. One judge said कि okay, it is fine that you should not be wearing hijab in the college or institutions where uniform is prescribed, but the other judge said something else. ठीक है, so both actually split verdict हो गया था लास्ट ईयर. यानी 2 जज थे, एक जज ने कुछ और जजमेंट दिया, एक ने कुछ और दिया, तो स्प्लिट हो गया, तो बड़ी बेंच बनानी होगी. So the 2 judge bench actually gave a split order, and that is why we need to have a larger bench now. So the Supreme Court is considering to set up a 3 judge bench to find out more about this. Okay, before moving on guys, on 29th January at 7 PM, we will be having a free workshop, how to get a call from NLU in CLAT 2024 with Abhimanyu sir. You can actually register it. The link is given in the description. Okay. Okay, yes. Now let's move on to editorial. So these are the top 4 editorials, है ना? ये. So let's talk democracy and structural slippages. So now first let's talk about this one, written by Mr. Harbans Mukhia. He taught at JMI as well. ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है? The democracy that is functional around the world today, even as it has a long history of evolution, has essentially a 19th century to 20th century Western creation. Every civilization of course claims to have had some form of democratic origin. जो अभी डेमोक्रेसी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, वो मोर और लेस वेस्टर्न ओरिजिन का देन है. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. कि जनरली कहा जाता है कि अभी जो डेमोक्रेसी जो पूरे वर्ल्ड में जो आइडियाज है वो वेस्टर्न ओरिजिन है, वेस्टर्न लोगों ने डेमोक्रेटिक आइडियाज दिए हैं. हालांकि कुछ हर सोसाइटी क्लेम करती है कि हमारे यहाँ भी पहले कुछ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी थी. ठीक है, बट द इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड गवर्नेंस थ्रू रीजनल एंड मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज एट द ऑलमोस्ट 100 or years of practice behind it. हाँ, वो बात सही है, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हार्डली 100 साल पुराना है. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनीवन? देखो, इन इंडियाज कंटेक्स्ट एक्चुअली इट मींस 18+. एवरीवन हु इज 18+, irrespective of religion, race, caste, gender, should have a right to vote. ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी जेंडर से हो, अगर वो 18+ है तो उसको अधिकार है वोट देने का. ठीक है, किसी किसी कंट्री में 16 होता है, किसी में 20 होता है, एज अलग हो सकता है, बट यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. सो ही इज सेइंग कि ये हार्डली 100 साल पुराना है. स्पेशली ही इज कंसर्न अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन, वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन. तो अगर आप देखोगे ब्रिटेन में हार्डली 1930s में वुमेन्स राइट आया. ठीक है, इवन फ्रांस जहां वुमेन्स राइट की इतनी बात होती है, वो भी 1944 में जाकर के फ्रांस ने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया, यानी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है. So hardly 60-70 years back actually, or at max you can say 70-80 years back, France gave women the right to vote. पहले सारे वुमेन को राइट टू वोट नहीं था. स्विट्जरलैंड जिसको इतना एडवांस कंट्री माना जाता है, वो 1971 में जाकर के दिया. इवन आफ्टर इंडिया, बिकॉज इंडिया व्हेन बिकेम इंडिपेंडेंट वी गेव द वोटिंग राइट, है ना? जैसे इंडिपेंडेंस हुए, व्हेन वी मेक द कॉन्स्टिट्यूशन वी गेव इक्वल राइट टू मेल एंड फीमेल. सो इवन आफ्टर इंडिया स्विट्जरलैंड गेव राइट टू वोट टू फीमेल. तो जहां तक फीमेल की राइट टू वोट की बात है, वहां पर इवन वेस्टर्न कंट्रीज का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है. अभी रिसेंट ईयर्स में, लास्ट सेंचुरी में जाकर के लोगों ने राइट टू वोट का अधिकार दिया. तो पहले इवन फ्रांस, जिसको इतना मॉडर्न या एडवांस सेकुलर नेशन माना जाता है, दैट आल्सो गेव इन 1944. यस, सो बेसिकली द ऑथर इज कंसर्न अबाउट द वोटिंग राइट्स स्पेशली ऑफ फीमेल. ठीक है, हाँ. So guys, we are seeing only 5 likes, so everyone please press the like button, share this video and subscribe to our channel. सबको like button press कर दो फटाफट. Yes. Now, basic to democracy is the devolution of power and with it welfare from the elite echelons to the ground level. ठीक है, so devolution की बात करें, devolution of power का मतलब होता है ऊपर से नीचे पावर उतरना. Means the center should be giving power to the state and state should be giving power to the local government. मींस पावर नीचे की तरफ फ्लो करना चाहिए, नीचे वाले गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होना चाहिए. यस, दैट इज द आइडिया ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स. डेवोल्यूशन अकर्स ऑन द प्रेमाइस ऑफ इंडिविजुअल इनइक्वालिटी, इन प्रैक्टिस इज देयर अ गुड रिकॉर्ड ऑफ दोस प्रिंसिपल एंड ऑल. तो इसी की बात कर रहे हैं.
Then he talked the near universal abolition of autocratic monarchies, hereditary aristocracy and the replacement by governance through popular mandate etc. हाँ, तो ओवर द टाइम, जैसे पहले अगर आप जाओगे मिडिवल एज में, देयर लॉट ऑफ किंगशिप, मोनार्की, ऑथोरिटेरियनिज्म बहुत ज्यादा था, है ना, वहां पे डेमोक्रेसी वगैरह नहीं होती थी, जनता का कोई राइट नहीं होता था. बट नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस गॉट रिड्यूस्ड. बट स्टिल वी कैन नॉट से कि कंप्लीटली खत्म हो चुका है वर्ल्ड में, because still we have authoritarian regime in different countries, parts of the world. Still we have kingship, monarchy and all. अभी भी बहुत जगह है. So that is what is being talked about. Then he's saying कि yes, it is important to note that human history has been witness of several experience of equality. कई जगह पे इक्वालिटी की बात कही भी गई, like Buddhism, Christianity, Islam, Sikhism. He is giving some religious ideology also कि यहाँ पर equality की बात कही गई है कि everyone is equal, कि there should not be a discrimination on the basis of caste, race, etc. and all. So he has discussed it. Then he is asking, are elections truly free and fair? क्या चुनाव पूरी तरह free and fair होता है? This is the question he posed and all. ठीक है. So अब देखो उसमें ये बहुत अच्छी बात की, the practice of elections belies even this notion of majority. There is hardly a government anywhere in the world that governs through a majority. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है. अब देखो इसका मतलब क्या होता है. वाई ही सेइंग कि कोई भी वर्ल्ड में शायद ही कोई गवर्नमेंट होगी जो मेजोरिटी पे रूल कर रही है, यानी मेजोरिटी वोटर सपोर्ट नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ कंट्री जहां पे 100 करोड़ पॉपुलेशन है, 100 करोड़ पॉपुलेशन इज देयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, बट नॉट ऑल द पीपल वोट. ठीक है, सो हार्डली 40, लेट्स से 50% पीपल वोट या 60%, चलो, सो हार्डली एक्चुअली 60 करोड़ पॉपुलेशन वुड गो एट मैक्स, आई एम सेइंग, to go to vote, they vote. इस 60 करोड़ में जो गवर्नमेंट जीती, मान लो कि फॉर एग्जांपल द मेजॉरिटी पार्टी हैज गॉट 40% सीट्स, जैसे किसी को 20% मिला, किसी को 10% मिला, तो किसी को 25%, समथिंग लाइक दिस, है ना, 5%. तो लेट्स से 40% ऑफ 60 करोड़ इज 24 करोड़. ठीक है, एंड दिस पार्टी मेक्स इट्स ओन प्राइम मिनिस्टर. नाउ इफ यू कैलकुलेट इट, आउट ऑफ 100 करोड़ ही हैज गॉट ओनली 24 करोड़ वोट्स, विच इज नॉट इवन हाफ, बिकॉज हाफ तो लोग तो आते भी नहीं वोट करने, समझ रहे हो ना. सो यही वो कहना चाह रहे हैं कि शायद ही पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी डेमोक्रेसी होगी जहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होगे उसके पास हाफ से ज्यादा वोट्स होगा. ठीक है, परसेंटेज वाइज जितने लोग वोट देने हैं उसका हो सकता है 30 या 40% हो, बट नॉट इवन हाफ, बिकॉज देयर इज नो कंट्री वेयर पीपल 100% पीपल वोट, हार्डली 50-60% पीपल ऑफ द कंट्री वोट. ठीक है, तो आधी, लगभग आधी से कम जनता तो वोट ही नहीं करती है, राइट. सो ये यूजुअली 30 to 40% ऑफ वोट कास्ट गिव ए पार्टी कंफर्टेबल वोट, है ना. तो ये आपको समझना, तो कोई भी लीडर जितना भी पॉपुलर हो, whosoever is the leader, he is not that much popular कि the entire 50% or 60% of the popular will come and vote for him. It's not like that. Sorry. So that is what he is actually discussing it. Then he is saying कि this democracy came to India in modern form. तो जो डेमोक्रेसी वो मॉडर्न फॉर्म का रिजल्ट है ना, मॉडर्न, सॉरी, एक्चुअली मॉडर्निज्म का रिजल्ट है. बट स्टिल वी आर प्री मॉडर्न इन मेनी सेंस. प्री मॉडर्न यानी अभी भी कुछ चीज में हम लोग पीछे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, सब कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा. सॉरी, होता यह है कि अभी भी हम लोग स्टिल द पॉलिटिक्स इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कास्ट, सब कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज. अभी भी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं है. सो देयर इज वेरी लेस टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट. इट्स मोर अबाउट, सो द पॉलिटिकल पार्टी while feeling a candidate checks the caste, subcaste, religion, language. They see these things more as compared to development. तो ज्यादातर जो पॉलिटिक्स की बातें होती है उसमें रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज ये सब ज्यादा भारी पड़ जाता है, रादर कि किसने डेवलपमेंट कराया, किसने एजुकेशन में कितना किया, हेल्थ सेक्टर में कितना इंप्रूवमेंट किया, अदर थिंग्स एंड ऑल. दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज ऑफ वोट बैंक एंड ऑल. ठीक है, so that is what he has talked about. Now there is a side article talking about President Biden's legal trouble could be a setback for a case to prosecute Trump. देखो अब इसको समझना है, पहले बैकग्राउंड समझ लो. Now in last year September, actually FBI in USA found many actually classified papers in US President's house and all. तो ये सब चीज काफी न्यूज में था, खास के फ्लोरिडा में. देखो 4 dozen empty folders marked classified found in Donald Trump's city, DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिवील्स. तो जब एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रेसिडेंट हो,
लाइक हियर इज इंडिया, दिस इज यूएसए, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाउस था फ्लोरिडा में, इन हिज हाउस एक्चुअली सम क्लासिफाइड फोल्डर्स हैव बीन फाउंड। क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। So once you leave the post of a president, you are not supposed to take the folder and keep it with your in your house, right? तो जब आप प्रेसिडेंट से हट गए तो आप अपना सीक्रेट फाइल जो है ना वो अपने घर पे नहीं ले जा सकते है ना, आप समझ जाओ ना। सो दिस इज सीक्रेट थिंग, सो इट शुड बी केप्ट इन द व्हाइट हाउस, द प्रेसिडेंट हाउस। बट दीज थिंग्स वेर इन द न्यूज कि डोनाल्ड ट्रंप के घर में फोल्डर्स एम्प्टी, खाली फोल्डर्स था, लेकिन क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट होता है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसका फोल्डर वगैरह मिला। सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज करेक्ट। Now, similarly, recently the FBI found in Biden's personal home also the documents classified. ठीक है, तो जो बाइडन के भी, जो कि भी he is a current president, in his personal home actually classified document has been found, या secret documents have been found. Okay, और वो कब का है? When he was the vice president. So I hope you are aware, earlier he was the vice president as well. So Joe Biden, he is right now the president of USA. But before that, during Donald Trump time, during Barack Obama time, he was a vice president as well. तो जो वाइस प्रेसिडेंट के जमाने का जो डॉक्यूमेंट है, यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट यू कैन से, और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैज बीन फाउंड इन हिज होम, इनके घर में मिला है, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज करेक्ट। ठीक है, सो बिकॉज आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के हाउस के अंदर आएगा, यू कैन नॉट टेक इट इन योर पर्सनल हाउस एंड ऑल, राइट। सो इसी पर ये आर्टिकल है कि ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट केस चल रहा है, तो अब इनके भी घर में मिल गया सेम थिंग। ओके, इज इट क्लियर? Are you able to understand, guys? And everyone, please press the like button. ठीक है, ठीक है. So, but he's saying, the author is saying कि डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा मिला, over 11,000 including 300 mark classified top secrets, but in Biden fewer than 12. ठीक है, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के घर पे ज्यादा शायद क्लासिफाइड या सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला है कंपेयर टू बाइडेंस हाउस। ठीक है, so that is what it is being discussed here. तो ये आपको पता होना चाहिए because it is very very important. Okay. ये सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ। एवरीवन गाइस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यस, नाउ दिस इज द आर्टिकल, नीडेड ए न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स। देखो माइनर जनरली क्या होता है? सो द चाइल्ड हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, जनरली इसको हम लोग माइनर कहते हैं, है ना। सो हु इज नॉट एन एडल्ट। ओके, सो डेटा प्रोटेक्शन, यू अंडरस्टैंड, सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, द डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज इन द पब्लिक, यू कैन गिव सजेशन ऑल्सो। तो एक डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने बनाया है, उसका ड्राफ्ट बनाया है, और आप उसमें कुछ सजेशन दे सकते हो कि ये अच्छा इंप्रूवमेंट है, खराब है, जो भी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। फर्स्ट स्टेट ऑफ अब देखो इसमें क्या है। फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन, देन विल बी डिस्कसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल। योर ऑप्शंस आर जस्टिस रंजन गोगोई कमिटी, जस्टिस मदन लोकुर कमिटी, जस्टिस आर वी रविंद्रन कमिटी, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी। व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? दिस इज इंपॉर्टेंट। For the past 1 year, actually, it has been very much in the news. Data protection bill, जो ओरिजिनली ड्राफ्ट करने को दिया गया था, I think in 2018 it was given, if I could remember. So, which committee was set up? So, its committee was set up under the chairmanship of a former Supreme Court judge. Anyone waiting for the answers? I'm very sorry. I have some issues with cough. So Justice B N Sri Krishna committee is the right answer. ठीक है, so D is the right answer. Okay, so just after actually the Supreme Court's judgment of right to privacy, Supreme Court passed an order saying right to privacy is a fundamental right. Yes, Priya Chavan, right. So the government set up a committee, Justice B N Sri Krishna committee for that. है ना? Now the author is saying the government has made many things to protect the rights of children. For example, commission for let me write it with green pen. Commission for protection of child rights have been made by the government. Very good thing. Right of children to free compulsory education means you can say right to education act. So it will be helpful actually for the poor people, poor students actually to get education. ठीक है, तो जो गरीब बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिल जाए। कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाए गए, ठीक है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा कुछ शायद नहीं हुआ। However, it has not been applied to the issue of data protection. So children का डेटा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? Like for example, if there's a child, कोई बच्चा है, ठीक है, अब उसने let's say he is 14 years old. Now he is not very mature, उतना समझदार नहीं है. Now he has made a Facebook account, और उसमें उसने सारी पर्सनल बात डाल दिया, all the personal thing of his house or something like that he reveals.
Later on when he becomes 18 plus 20 21 22 he realized कि उसने बहुत सारी चीज अपनी पर्सनल घर की बात पब्लिक में डाल दी. So this is violation of privacy. So we need to protect the privacy of the young minors, है ना. Because minors बच्चा जो होता है उसका खुद नहीं होती समझ होती है ना. जो बंदा बड़ा हो गया है he can understand what is privacy and what I should not be putting on the actually the Facebook or social media and all. But for minors we need to have some strong provision and all. So that is what the author has said. हाँ है ना. Instagram also nowadays children as young as 10 11 12 are using Instagram and all. So it has both positive as well as negative aspect also, है ना. Yes, Rashmikant Oja, Priya Chavan, you were right. Justice Sri Krishna Committee, है ना. So that is what he's talking. The author is talking about, and they have mentioned many things. Ki we need to relax the age of mandatory parental consent for all services. So they have given actually some examples or some suggestions. So you can read it. I mean, otherwise it's not that much important from your exam point of view. But I have given an idea. Okay. Now there's a question. This is very very important actually question. What is the name of the Prime Minister of New Zealand who has decided to step down? Jacinda Ardern, Anthony Albanese, Angela Merkel, Amina J. Mohammed. What is the right answer? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है, उन्होंने इरादा किया है रिजाइन करने का. अगले महीने वो रिजाइन कर देंगे. एंड एक्चुअली व्हेन शी इज डिसाइडेड टू रिजाइन इट बिकेम वेरी फेमस, आई मीन इन द एंटायर वर्ल्ड. तो आपको बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन गाइस, वी आर सीइंग 10 लाइक्स ओनली, 16 वाचिंग. सो एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. Yes, Jacinda Ardern is the right answer. Priya Chavan, very good. Yes, Rashmikant, you all are right. So she has actually decided to resign. And when she actually announced it, the entire world got shocked. क्या रे, कैसे resign क्यों कर दिया? So at the age of 37, in 2017, she became actually one of the youngest female president, prime minister of a country. And so she was actually there are very few female leaders at the world level, and she was one of them. In fact, she was inspiration for many and all. And in 2023, at the age of somewhere around 42 and 43, she has decided to quit. तो उन्होंने इरादा किया है resign करने का. Maybe some personal reason and all. We are not going in detail. So can anyone tell me what is the capital of New Zealand? Here is India, and here is Australia, and here you will find New Zealand. The capital city is Wellington. Okay, so just have an idea about it. Okay, now this is a very very important article, basic structure of constitution. ये बहुत ज़्यादा important है. Now why I'm saying it is very very important, there is a reason behind it. Recently the Vice President of India actually commented on basic structure of constitution, criticizing basic structure. ठीक है? And then actually the Chief Justice of India defended the basic structure. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको डिफेंड किया कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छी चीज है. So there is a tussle going on between actually the government and the executive and the judiciary about the basic structure and all. So this is very very important. Can anyone tell me in the comment section which judgment of Supreme Court resulted into the formation of a basic structure? We have discussed so many times. Yes, Rashmikant, the capital of New Zealand is Wellington, right? Huh? So can anyone tell me? And we discuss basic structure of the constitution in detail in our paid classes. So those who are my paid batch student, they must be aware of this. I have taught in detail the idea of basic structure, and this time it is very very important. So this is the CLAT 2024 course, and 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests will be provided. And if you have any query, please call on this number. And yes, we discuss comprehensively each and every important topic like basic structure. Was there in the news, and in fact in the last year's classes and the last year batches I have discussed it. So those who are my old students, they are also aware of this. Yes. Okay, and Anika Sehgal has got 18th rank, 1 year online classroom program, and she has got 18th rank, and she was from our student, our batches. And next time I will be showing your photo here, Anna. And yes, this is why basic structure was very much in the news. So basic structure doctrine, Vice President criticized it. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्स इट्स नॉर्थ स्टार गाइडिंग लाइट. तो चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसके उल्टी बात की. उन्होंने कहा कि नहीं, ये नॉर्थ स्टार है, गाइडिंग लाइट है. ठीक है, तो उन्होंने ही एक्चुअली डिफेंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, रश्मिकांत ओझा, वेरी गुड. द केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, केशवानंदा भारती केस, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट. सो देखो इस आर्टिकल में मेंशन भी द सेम आर्टिकल, ये वाले आर्टिकल में
The 13th judge bench order of Keshavananda Bharati vs State of Kerala case 7:6 gave the idea of basic structure of constitution and all, है ना, इसे पता होना चाहिए. Yes, 1973. Yes, Rashmikant Oja, right, हाँ. Okay, let's move on further. Page number 10 में एक आर्टिकल थी, PM leader pay tribute to नेताजी at Parliamentary Hall. I have told you नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे था yesterday, 23rd January, and we celebrate it as Parakram Divas, है ना. So Parakram Divas. So they actually paid tribute, है ना, श्रद्धांजलि कहते हैं ना हिंदी में, I think. Yes, ये important है. This can be asked. BSF camel contingent to have women personnel at Republic Day parade. तो ये पूछा सकता है BSF की जगह they will write X. ये पूछेंगे which force will be having a camel contingent of having women personnel at Republic Day parade. So the answer is BSF, Border Security Force. Border Security Force. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है. The name of the force can be asked. They will give BSF, CRPF, CISF, NSG. They will give 4 options. ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन मार्क करना, ठीक है. Okay, 4 die over a dozen fall in fresh war huge tragedy. देखो ड्राई बिहार का मतलब क्या हो, ड्राई मींस वेयर लिकर इज बैंड, जहां शराब बैंड होती है वहां ड्राई वर्ड यूज किया था. ड्राई बिहार, ड्राई गुजरात. हुज ट्रेजेडी मींस डेथ ड्यू टू स्पूरियस लिकर या जहरीली शराब, है ना, वेनेमस व्हाटएवर यू कैन यूज, है ना. जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है तो उसको हम लोग हुज ट्रेजेडी वर्ड यूज करते हैं. और ड्राई बिहार मतलब बिहार में शराब बैंड है तो भी उन लोग कहीं से शराब जुगाड़ कर लिए होंगे और उसके बाद हो सकता है जहरीली हो और पी करके उनकी मौत हो गई. हाँ, लिकर इज बैंड. सो देयर इज अ होमवर्क, गो एंड फाइंड आउट अंडर DPSP. आई हैव टॉट माय पेड बैच स्टूडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन DPSP रिकमेंड्स लिकर बैन. कौन से आर्टिकल में DPSP लिकर बैन की बात करता है? सो गो एंड फाइंड आउट. इट्स अ होमवर्क, ठीक है. ओके. Yes, Koshyari informs Modi of his desire to step down. So Mr. Bhagat Singh Koshyari, he is governor of actually Maharashtra, and he has said he wants to actually step down. He wants to resign. तो उन्होंने convey किया. So it was in the news. So just have an idea about it. ठीक है. ये this is very 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 important news. ये काफी ज्यादा important news है. INS वागीर 5th Scorpion class submarine commissioned. So इसको पढ़ना. I teach these things in paid classes. Project 75. Go and read about it. Under this 6 Scorpion class submarine are being made and this is the 5th one. 6 टोटल बनाया जा रहा है. INS वागीर 5वां है, ठीक है. So that is being actually developed. Actually it has been commissioned, मतलब now it will be used by Navy. Submarine को हम लोग हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं. It is not a ship. It is different from a ship. Actually it works inside the water. Ship actually flows above the water, ना. I mean it moves above the water. But submarine, I think submarine जानते होगे आप लोग. पनडुब्बी कहते हैं हिंदी में, पानी के अंदर चलता है. So the 5th one is INS वागीर. There will be another one, the 6th one, INS वागशीर, which will be coming soon. ठीक है, वो भी आने वाला है आगे में, ठीक है. So just have an idea about it. Go and read about Project 75. Which company, actually it's a homework. After the class is over, write in the comment which company actually has मैन्युफैक्चर्ड दिस INS वागीर. कौन सी कंपनी ने बनाया है, आप जाके पता करो, ठीक है. आर्टिकल 47 प्रोहिबिशन ऑफ लिकर. यस रश्मिकांत, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज आर्टिकल 47. वेरी गुड. हाँ, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. अनिका सहगल गॉट 18th रैंक एंड शी इज फ्रॉम आवर पेड बैच, ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम यू कैन बी हियर एज वेल. So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Go to CLAT and Law section. You will get a lot of content there. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.